So in order to understand what TAT is, I think most of you are repeaters, so you guys are already familiar with it. But just to put it into a context, TAT is something which taps into your unconscious mind, right? Unconscious mind, basically how it does that, it tries to bring it out in the form of experiences through your through whatever words that you write. Fine. So whenever you see a stimulus, and on the basis of that you write one sentence. So there are a lot of assumptions that you've already made, right? So it tries to explore those assumptions, what has become a very integral part of your thinking, what of your thought process. That is why TAT is very crucial. ठीक है, एंड 50-60% जो वेटेज है इसी का रहता है, इसी वजह से, दैट इज द रीजन व्हाई. फाइन, बिकॉज इट बेसिकली, आई मीन, इफ यू वर टू इम्प्रूव टैट you have to work in the long run. Okay, so we'll be discussing how and what you guys will need to do in order to improve your TAT. Okay, in the long term, how to plan it. Today we'll be discussing about major areas. Okay, what are major areas and what is the goal? When I say major areas, what do I mean by that, right? And how will it be helpful in your TAT? So ये basically समझने की कोशिश करेंगे, मतलब like, you know, it's a basically compass of your personality, major areas part, right? Okay, and also we'll be reviewing some of the stories, right? We won't be able to review each and every person's story in one day itself, but see, it might be a slow process. At the end of it, what goal we have, we want to finish everyone's reviews, right? But it cannot be done in just one single day. Okay, guys. So please bear with me in that part, right? And what happens is कि I've done a lot of psych batches. Fine. होता क्या है, people have a tendency to lose interest whenever other person's stories are being reviewed. Fine, so please do not do that. Why? Because I have a tendency, I mean, this is how we move forward, कि आपने जो गलती नहीं करी है, probably some other person has done it and you are likely इस टेस्ट में नहीं करी होगी, probably किसी और टेस्ट में करेंगे. ठीक है, सो दैट इज द गोल वी ट्राई टू हाईलाइट. एंड वहां से ना हम लोग, जैसे कुछ जनरल थीम्स होती हैं, जैसे डेथ बेस्ड टीएटी, नेगेटिव टीएटीज में क्या करना है, ठीक है, न्यूट्रल टीएटीज में क्या करना है. सो इस टाइप की चीजें हम एग्जांपल्स के थ्रू उठा के लेके चलेंगे. एंड इट्स गुड दैट किसी और ने जो गलती करी है वो इट कम्स आउट in front of you before you actually commit it. Fine, so that will be the goal. Point being, किसी और की स्टोरी डिस्कस हो रही है तो अपनी ही स्टोरी समझ के ना ध्यान दे, ठीक है, बिकॉज यू कैन टेक अवे क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर. दैट इज द गोल. ओके, राइट. सो दैट बीइंग अंडरस्टूड, आज हम थोड़ा पीआईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीआईक्यू आल्सो विल सी बनना कैसे है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू टेक इनटू कंसिडरेशन, और रादर कॉमन चीजें, जो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो कैसे अवॉइड करनी है. ठीक है, सो दैट विल बी द गोल, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद द पीआईक्यू. ठीक है गाइस, आपकी स्टोरीज में इफ यू वांट टू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, you better make sure that these whatever you've written in PIQ also gets reflected. Fine. Okay, just a second. Thank you. Yes, I have the pen tab now. Just give me a moment. Alright, just a moment, guys. Okay, so who all have shared their responses? So Reva has already shared, Atharv, Sakshi and Apurva. 4 of us have already shared, है ना? ठीक है, very nice. So we'll try to do at least 2 to 3 stories of each person. Fine. And उसके पहले हम थोड़ा
समझते हैं what is, I mean you have to understand before you get into the test, you have to understand the mindset of the examiner. What happens is whenever a psychologist is checking your stories, ठीक है, so they have a crunch of time, definitely, है ना. So अगर crunch of time है तो what shortcut do they take? So they have a tendency, what they do is तीन stories initial वाली जो होती है ना, वो उठा के देखेंगे, ठीक है, थॉट्स एंड इमोशंस देखते हैं उसमें, एंड अच्छे से है या नहीं है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, थॉट्स एंड इमोशंस देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट थ्री स्टोरीज देखेंगे अच्छे से, उसके बाद सीधा दे जंप ऑफ टू द विच पार्ट, द सेल्फ डिस्क्रिप्शन पार्ट, ठीक है. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड एंड तभी मतलब लाइक यू नो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. बेसिकली पहली तीन स्टोरीज में ना यू कैन नॉट फक अप, दैट इज what is meant. Fine, you have to display each and everything that you have in the first three stories itself. Okay, flow अच्छा होना चाहिए, thoughts and emotions अच्छे होने चाहिए, each and everything should be good. Fine, एक सेकंड देना, let me just find the PIQ वाला images. पता है the thing is, लोग शिकायत करते हैं यार कि सर बहुत धीरे धीरे आप वो करते हो, I mean थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, but you know learning is a slow process. Fine, that is why I have kept it 15 days long, है ना. तो जिसके भी reviews नहीं होते हैं, at the end of it we like you know we wind up everything. सर आई हैव वन डाउट. हाँ पूछो. सर ये जो आपने बोला कि जो मतलब जो फ्लो रहता है ना, जो प्रॉपर फ्लो रहता है, तो वो भी हाँ कैसे तो मेंटेन करें, मतलब है क्या वो जो जो छुपा हुआ है ना, जो मतलब जो एक स्टोरी में रहता है, हाँ, वो क्या रहता है सर? फ्लो इज कैसे बेसिकली हम यार वो follow आपके करें? थॉट्स इमोशंस, राइट, फिर हम्म. एक्शंस आए, दैट इज बेसिकली द फ्लो. दूसरी चीज कई बार ना स्ट्रेस में क्या होता है, देखो व्हाई इज इट लक्ष्य इंडिया, अच्छा नहीं रुको, व्हाई इज इट, आई मीन क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लाइक यू नो टैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस. क्लिनिकल साइकोलॉजी में देयर इज नो टाइम प्रेशर, ठीक है, सो व्हाई इज इट बीइंग डन, क्यों कर रहे हैं. फौज में ना क्विक डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा चाहिए होता है, ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट्स बीइंग डन. एंड ट्रस्ट मी, इफ इंग्लिश खराब हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, सो इट्स नॉट डिजायरेबल, ठीक है. सो दैट इज द बेसिक गोल. आई होप यू अंडरस्टैंड कि पहली चार पांच लाइन जो निकल के आ रही है ना, वो थोड़ा स्मूथली फ्लो में निकल के आनी चाहिए, ठीक है. विल डिस्कस सम स्टोरीज अराउंड इट आल्सो. आई शो यू सम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की स्टोरीज भी, ठीक है. सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स start off with the PIQ thing. Okay, I hope that answers the question. Okay, right. Okay, guys. So we have the PIQ in front of us. कुछ चीजें important है, कुछ चीजें तो आप भर ही लेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ I mean see, yeah, all of you have experience. So छोटी मोटी चीजों पे मैं टच नहीं करूंगा, ठीक है, that you guys already know. कुछ चीजें टच अप कर लेते हैं, ठीक है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली मैं मिस्टेक्स देखता हूँ ना, वो टच अप कर लेते हैं, ठीक है. जैसे यू हैव रिटन यहाँ पे फुल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेट्स से व्हाटएवर इंस्टीट्यूट यू हैड, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया बोर्ड यूनिवर्सिटी, लेट्स से जीबीयू हो गया. फाइन, व्हाट पीपल हैव अ टेंडेंसी, यहाँ पे आपने ईयर भी लिख दिया, लेट्स से 2023, ठीक है. व्हाट पीपल हैव जनरली फॉरगेट इज ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं, ठीक है. सो यू स्टार्ट ऑफ विद बीटेक, लेट्स से,
ठीक है, बीटेक ईसी ब्रैकेट में करके आपने फिल इन कर दिया, फाइन, दिस इज फाइन, ओके। अब आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें आप भर लें, ठीक है। दिस इज वन मिस्टेक्स विच इज वेरी कॉमन। दूसरी चीज, यहाँ पे बॉर्डर और डे स्कॉलर वाला चीज जो है ना, ये भरना, ठीक है। इफ यू हैव लिव्ड इन हॉस्टल, गो विद बॉर्डर, फाइन, अदरवाइज गो विद डे स्कॉलर, ठीक है। लेट्स टू लुक एट मोर थिंग्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ट्रेनिंग, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग, फाइन, हटाओ। पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। सो वेन एवर यू हैव नॉट प्लेड एनी स्पोर्ट विच इज ऑन द, I mean, where you have not represented anything, you've just played it casually. So you write here, right? Played casually. Let's say, but if you've played volleyball casually, ठीक है। प्लस फर्स्ट थिंग, ये जो है ना, जैसे मतलब जितने भी कैजुअली वाले स्पोर्ट्स होते हैं ना, these should be low priority. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, यू फिल अप, देखो यार, हमें ज्यादा चमकने वाली चीजें डालनी चाहिए पीआईक्यू में, फर्स्ट थिंग्स, ठीक है। सो यू स्टार्ट ऑफ विद एनी स्पोर्ट दैट यू हैव अचीवमेंट इन, ठीक है। जरूरी नहीं है वॉलीबॉल लिखना, ठीक है। वॉलीबॉल अगर आप लिखना चाह रहे हो, so the most important thing that I mean, why are you writing it, that should be the question. If you have learned something significant यहाँ से, let's say maybe teamwork, fine, or maybe defensive strategies, or if you have some significant takeaway from it, if it adds on to your life, then only add it, ठीक है। अदरवाइज इसके ऊपर के जो है ना आपके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट वाले होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज क्लियर, ठीक है। यू आर गोइंग देयर एज योर ओन ब्रांड, फाइन, and you try to highlight the positives of your brand, right, not the negatives. Generally we try to do that, ठीक है, okay. That being said, यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप लिख सकते हैं significantly, okay. That being said, coming here, यहाँ पे क्या होता है ना, हॉबीज एंड इंटरेस्ट में, हॉबीज एंड इंटरेस्ट में जनरल डिफरेंस क्या होता है ना, हॉबीज इज बेसिकली समथिंग, सम एक्टिविटी दैट यू डू। Sir, I have a question here. Yes, Sakshi, just one second. Interest is something you like to know about, fine, generally speaking you like to be aware about this. Yes, Sakshi, पूछो। Sir, can we write listening to podcast as our hobby or interest? If it's if something you have taken away from it, right, something significant, it's added to your Yes. life, then only, Yes. ठीक है। Okay. Sir, what else can we write? Like, I have experienced that what you're writing takes you deep down into too much of questions. हाँ, definitely. So, so I was thinking that I should write such a thing as my hobby or interest, of which I'm knowing everything. So, is it right हाँ, to mostly do that? yes, yes, definitely, mostly, Okay. ठीक है। मतलब like I had just to give you a context, in my sports part ना, I had just written one thing, which is basketball, ठीक है। You just don't overload it, right? I had played volleyball also, right? I had played cricket also, but I wrote basketball. Why? Because achievements उसमें सबसे ज़्यादा थी, and uh, this whole portion, I'll tell you, जितना achievement वाला portion था ना, वो पूरा भर गया था मेरा basketball से ही। So that was the perspective. I hope you understand, right? This whole area got there was no space left here. Okay. So सिर्फ एक चीज यहाँ पे लिखी मैंने, एंड एक और होता है यहाँ पे हॉबीज एंड इंटरेस्ट में, यू राइट हियर समथिंग, फाइन, हॉबीज और इंटरेस्ट आपके, हियर आई रोट बास्केटबॉल बिकॉज बास्केटबॉल वाज माय हॉबी आल्सो, ठीक है। इट वाज द स्पोर्ट एंड इट वाज समथिंग दैट आई वुड डू। हॉबी इज बेसिकली विच व्हाटएवर एक्टिविटी यू डू व्हेन यू गेट द फ्री टाइम, whenever you get free time, so hobby वो हो गया, ठीक है। पॉडकास्ट, आई थिंक पॉडकास्ट इज मोर ऑफ अ इंटरेस्ट, और ठीक है चल, हॉबी तू बोलना चाहेगी।
सर लेकिन अगर मुझे उस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आई थिंक आई विल बी एबल टू आंसर, सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग ऑफ राइटिंग इट, क्वेश्चन इस पे ज्यादा बिकॉज करेगा नहीं, आई फील। रीडिंग बुक्स मैंने फर्स्ट इसमें लिखा था तो फिर वो बहुत ही ज्यादा डीप डाउन लेके गए थे, तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उससे अच्छा फिर बता ही नहीं सकते वो क्या पूछेंगे, तो फिर आई थॉट दैट instead of writing it I'll write something that will make my confidence high. अच्छा ओके, पॉडकास्ट में ही विल नॉट गो, ट्रस्ट मी, देख के ना छोड़ That's why देगा। I was writing it. हाँ, सो ज्यादा से ज्यादा तो यही पूछ लेंगे कि कौन से सुनते हो, किसका सुनते हो, या तो फिर व्हाट यू गेट, तो मतलब उतना तो बेसिक 3-4 क्वेश्चंस तो आई विल बी एबल टू आंसर, सो दैट्स व्हाई. ओके ठीक है, मेक सेंस, ओके फाइन, गो अहेड विद दैट। द मेजर क्वेश्चन इज लाइक, वो फिर पॉडकास्ट में ना तेरे को लेके जाएगा कि लाइक व्हाट आर द मेजर पॉडकास्ट वाले बंदे, ठीक है, व्हाट इज पॉडकास्ट, हाउ डिड इट ओरिजिनेट, ठीक है, बिकॉज पॉडकास्ट इज नॉट समथिंग न्यू, इट हैज बीन देयर सिंस क्वाइट अ व्हाइल नाउ, अभी यूट्यूब पे पॉपुलर हो गया Yeah, yes sir. है ना, सो एवरी Yes sir. पर्सन नाउ दे हैव अ पॉडकास्ट, दे हैव अ टॉक शो, so basically Yeah. that's happening, right? Okay, that being said, ठीक है, लेके चले जा, okay, right, so ठीक है, so hobbies and interest हो गया, coming back, name of the, if you have any other maybe physical activity ना, so उसको preference दे दियो, ठीक है, I mean have some variety is what I would say, देख ले whatever suits your taste palette, and whatever seems a bit more fit on your personality, go with that. Fine. Name of the activity यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे these might be very small and very large activities also, ठीक है, let's say if you are have ever organized, let's say teachers day or any small one day event also, you can mention, write down over here, ठीक है, position of responsibility held in NCC, scouting, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप, ठीक है, सो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ना लोगों का वो हो जाता है, सो जनरली व्हाट पीपल टेंड टू मिस आउट इज, लेट्स से अगर आपके पास सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रही है कि आप सेक्रेटरी, जरूरी नहीं है सेक्रेटरी या प्रीफेक्ट ही रहे हो, ठीक है, इफ इवन इफ यू बीन द क्लास मॉनिटर एट सम पॉइंट, दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है, सो in a similar project head, let's say if you were in a major project or minor project college में, ठीक है, and you were the head of that, of those 4 people की team, ठीक है, so you can put in project head over here, and project head in minor project, that can be done, ठीक है, nature of commission understood, ठीक है, nature of commission यहाँ पे जो भी आपका आएगा कि permanent commission और short service commission, ठीक है, दिस इज प्रीटी मच इजी, फाइन, चॉइस ऑफ सर्विसेज आपका आर्मी नेवी और एयरफोर्स, ओके, नंबर ऑफ, अब देखो ये जो है ना 13 एंड 14, इसमें काफी फ्रीक्वेंटली लोग गड़बड़ करते हैं, व्हाट इज द जनरल स्टैंडर्ड और आई मीन द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, that is the total number of attempts including the screen outs as well as conferences you write down here, if you write down 7 here, ठीक है, and details of previous interviews, so let's say if you only put in 3 details here over here, ठीक है, so it is assumed, sorry, 1 2 and 3, it is assumed that apart from these 3 interviews, out of these 7 attempts and 4 you got screened out, ठीक है, this is the default mechanism unless specified otherwise, ठीक है, तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना काफी क्रूशियल है, राइट, सो सम बोर्ड्स दे मैंडेट कि आपको साथ के साथ इंक्लूडिंग द स्क्रीन आउट्स उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, सो यू हैव टू आस्क देम, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गो विद दिस मेथड, ठीक है, नाउ Yes, sir. ओके, यस, गो अहेड, ठीक है, right, so now that this is understood, now why my question is, why am I asking you about PIQ, ठीक है, why did I even care enough to like pick up PIQ, why, because couple of things are important over here, right, क्या क्या चीज है देखो, जो मेजर एरियाज की अभी आज हम एक लिस्ट बनाएंगे, we'll
discuss, right? So major areas पे list बनाएंगे हम, वहाँ पे आपका present occupation, this is crucial, ठीक है? If you have done NCC, then that will also be crucial, fine. And let's say you have participated in a lot of sports activities, fine. Let's say two sports you have participated, ठीक है? Let's fill in one being basketball, fine, and the other one being volleyball, ठीक है? These two are also crucial, fine. So present occupation, NCC training, basketball. What else? Hobbies and interests, ठीक है? This also becomes important, fine. Activity group, now that you're doing, so extracurricular activities में whatever you've done, this also becomes important. Now whatever I'm highlighting, so you just keep gathering that, all of that, ठीक है? We'll put it to use very shortly, fine. Position of responsibility, fine, this can also be taken up, okay. And yeah, so इस पेज में से इतना, ठीक है? पिछले पेज में आते हैं, ठीक है? पिछले पेज में आपका which portion is crucial, I'll highlight it. Let's say this engineering वाला, or maybe whatever graduation you've done, ठीक है? Plus यहाँ पे ना, whenever you're completing class 10th and 12th, there might be some favorite subjects, ठीक है? So take note of these all things, right? So that makes it about 7 or 8 odd things, and these things, they will be very crucial when it comes to planning your I mean the interview as well as the psych stories, ठीक है? So what the idea is that since you have to reflect yourself, interview is about you, so therefore we pick up these major areas and we try to frame stories around it, as well as when it comes to the interview, we try to keep our responses around this only, fine, because these are, I mean, majorly these things are what reflect you, okay. Additionally, there are some extra things which we have, which is family and friends. इनका भी मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? इनका कैसे यूटिलाइजेशन करना है, बट सो फार व्हाट वी हैव सीन, पैशन एक एडिशनल चीज हो सकती है, ठीक है? यू माइट बी पैशनेट अबाउट वन ऑफ द हॉबीज दैट यू डू, ठीक है? और you might be passionate about something you might not have done yet, ठीक है? Like let's say if I like adventure sports but I haven't been able to do it so far, ठीक है? I plan in the near future, why? Because it might take up a lot of resources, ठीक है भाई? मतलब फ्री में तो होता है नहीं, है ना? जाहिर सी बात है। तो हो सकता है मेरा पैशन हो भाई, मुझे करने में अच्छा लगता हो, लाइक यू नो, इट एक्साइट्स मी, इट थ्रिल्स मी. So that one thing. So yesterday, one question had been asked by Piyush, which is imagination कितना होना चाहिए, ठीक है? So imagination जो होना चाहिए ना, आपका imagination उतना ही हो कि realistic sound करे, ठीक है? Imagination can be something which you have not yet experienced. So question is, sir, can I write a story around something that that has not happened in my life yet, right? But I want it to happen. Yes, you can do that. ठीक है? Do all the stories need to be from my own life only? Not necessarily. ठीक है? But they need to be realistic. Sir, Yes. sir, many people, suggest like talk to many recommended candidates also, and heard often that you should They write. say अच्छा चल ठीक है, तू बता ले पहले, फिर I'll finish up. हाँ. Yes, Sakshi. They say that you should write TAT stories around your, environment, around your life, what all happened with you, or you have to relate those characters with your life itself. But sometimes it is not relating. Like someone is dead in the picture, so how we will relate? So We'll come to that that. We'll okay. come to that. Definitely, definitely. See, very nice perspective brought out by Sakshi. So,
ये चीज द थिंग इज कि डेथ बेस्ड टीएटी इज वेरी स्पेसिफिक थिंग फॉर दैट ना. चलो सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन, सो आई विल क्विकली जस्ट एक स्लाइड में एक बार में दिखा के ना स्लाइड, आई विल कम बैक टू दिस वन. ठीक है. सो दीज आर द थ्री बेसिक आउटलाइंस दैट यू हैव टू डू टीएटी में. ठीक है. दीज आर देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इमेजेस बेसिकली: न्यूट्रल, स्ट्रेसफुल एंड अनरिलेटेबल. ठीक है. लेट्स से डेथ वाली जो हो गई ना, डेथ वाला सिनेरियो आपने लाइफ में नहीं देखा, किसी की डेथ नहीं देखी, तो इट बिकम्स अनरिलेटेबल. ठीक है. इफ देयर इज माउंटेन क्लाइंबिंग in the picture and you haven't done mountain climbing, it becomes unrelatable. If there's a ship in the picture and you haven't been to a ship, it becomes unrelatable. जाहिर सी बात है, फौजी है, it becomes unrelatable. ठीक है. So देखो न्यूट्रल इमेजेस जो है ना, न्यूट्रल इमेजेस हमें अपनी मेजर एरिया या अपनी लाइफ से निकाल के लिखनी होती है. ठीक है. यू टॉक टू रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, दे ऑलवेज से कि मैंने अपनी लाइफ से रिलेट करके स्टोरीज लिखी थी, अपनी लाइफ से रिलेट करके लिखी थी, बट वो आधी बात बताते हैं. ठीक है. ये कोई नहीं बताता न्यूट्रल इमेजेस में ही करना है. ठीक है. फिर कुछ स्ट्रेसफुल इमेजेस आते हैं जिसमें डायरेक्टली कोई एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है. कोई किसी को मार रहा है. ठीक है. ऐसे सिनारियो में आप कुछ ना कुछ उसको रिजॉल्व ही करोगे, मोर और लेस. जाहिर सी बात है, जो भी स्ट्रेसफुल कॉजेटिव फैक्टर है आप उसको रिजॉल्व ही करेंगे, है ना. सो देयर इज नॉट मच ऑप्शन ओवर देयर. तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट होता है ना, ज्यादा विजुअलाइजेशन. ठीक है. यू शुड बी एबल टू पुट योरसेल्फ इन दैट पिक्चर. Imagine yourself in that picture. Imagine that you're there. Whatever is being conveyed to you through the picture is happening all around you. Fine. वहां पे क्या करेंगे आप? फिर वहां पे ना सीक्वेंस ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. कुछ लोग क्या करते हैं ना, आग लगी थी तो पहले क्या करा, पहले मुर्दों को ही घर पे भेज दिया, उसके बाद फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं. ठीक है. अच्छा है, आ जाओ, है ना, फायर ब्रिगेड को कॉल करा. नो, है ना. You have to understand the importance of visualization, right? Being able to understand the emotional demand. ठीक है. So these are the three things that we basically do. तीन parts में character, I mean सब divide करते हैं. ठीक है. But for the time being, let's return to the major areas part. देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं लोगों को बता देता हूँ major areas क्या करना है, फर्स्ट क्लास में बता देता हूँ. ठीक है. चौथी क्लास तक भी ना लोगों ने बनाए नहीं होते. ठीक है. और फाइट यही हो जाती है फिर कि मेजर एरियाज कौन बनाएगा, किसके वो आएगा क्या नहीं होगा. आई टेल यू, देयर वाज वन पर्सन दैट आई नो, लास्ट ईयर के जनवरी बैच में था. एंड उसके सिनेरियो में क्या हुआ ना, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मेजर एरियाज इज द ओनली वे टू गेट रिकमेंडेड, बट इट डेफिनेटली गिव्स यू स्ट्रक्चर. ठीक है. 3 या 4 बंदे थे एंड आउट ऑफ देम 2 वर क्वाइट सीरियस अबाउट दिस मेजर एरियाज वाली अप्रोच. ठीक है. एट द एंड ऑफ द ईयर बोथ ऑफ देम गॉटन रिकमेंडेड. एक कोस्ट गार्ड के लिए हो गया, एक तो एनडीए एकेडमी चला गया. ठीक है. एंड थर्ड पर्सन हु वाज विद देम, ही डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली. स्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा नहीं करी थी उस बंदे ने. ठीक है. सो ही केम बैक टू मी इन द अभी पिछले महीने दोबारा. ठीक है. सो आई होप you guys take it seriously, because anything that you take away from this course is major areas. ठीक है. बेसिकली वी ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस फौजी, व्हाट इज द गोल बिहाइंड दिस, है ना, कि मतलब बहुत पुअर रिप्रेजेंटेशन है, आई नो, बट दिस फौजी इज बेसिकली लाइक यू नो वी हैव ट्राइड टू ब्रेक हिम डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ठीक है. कि वी आर ऑल, आई मीन हम कैसे, हाउ वुड वी रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स. ठीक है. इफ वी वर not to represent ourselves metaphysically. ठीक है. We would represent ourselves as a collection of ideas, balls of energies basically, है ना. So your ideas, your experiences, your environments have culminated into who you are and what your thought process is today. Fine. So we try to backtrack all of the things which have shaped your personality, your thought process over the years. Fine. So it's not necessary here that you limit yourself. बचपन की कोई चीज याद आ रही है ना, put it there. And in fact, when we talk about, when we are
close to 5 years, 5 to 10 years old, that is when we are actually देखो 0 से 5 साल की एज में ना बहुत रॉ होती है पर्सनालिटी, ठीक है. उस टाइम की किसी टीचर की, केजी टीचर की, क्लास फर्स्ट सेकंड के टीचर की, आपको इफ यू गाइज हैव एक्सेस टू द रिपोर्ट कार्ड्स में क्या रिमार्क्स आपके बारे में लिखे गए थे, those will be absolutely fundamental, absolutely crucial if you still have it. ठीक है, अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स से पूछो कि मेरे क्लास केजी के टीचर ने क्या बोला था मेरे बारे में, मेरे क्लास ट्वेल्थ के सॉरी फर्स्ट के टीचर ने क्या बोला था. I want you guys to ask that because there the personality truly manifests itself. ठीक है, it's very unrestricted and it's very demanding, very unabashful. Fine, किसी चीज की परवाह करे बिना you display your personality. अभी के टाइम में हम as we grow adults we get a bit restricted. ठीक है, but your true personality would have manifested itself close to the years of 7 to 8, 5 to 8 की एज में ना बहुत अच्छे से manifest करा होगा. So we try to find all the things that might have influenced your uh, life, your decision making, your thought process. Okay, we try to put it in major areas. So there's no restriction to this. Do you understand? मैंने यहाँ पे 8 चीजें ही बनाई हैं, लेकिन 10, 12, 13, 14 कितनी रखनी है ना, वो आपने डिसाइड करना है. सिग्निफिकेंट होनी चाहिए ये, है ना. अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि वॉलीबॉल डे 1, ठीक है, वॉलीबॉल इन स्कूल, वॉलीबॉल इन कॉलेज. I hope you understand, right? Significant कुछ चीज होनी चाहिए. It should not be redundant. Okay. That being said, friends और family के perspective से हमें क्या करना है additional? देखो, what I want you guys to do about friends and family, ये काम कर लेना आज जाते ही, ठीक है. एटलीस्ट चालू कर दो, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दिस. So friends, I mean, recall all your friends that you've had, right? जो SSB में आप बोलना चाहेंगे, these can be from different. They have to be from different phases. ठीक है, school friends, right? College friends, fine. Neighborhood friends, right? And नेबरहुड हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया. इसके अलावा इफ यू लिव्ड एट डिफरेंट प्लेसेस तो वहां के फ्रेंड्स, ठीक है. सो मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 फ्रेंड्स. इनके बाहर ना ज्यादा हम डिविएट नहीं करेंगे. इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमसे पूछेगा ना, टेल मी सम अबाउट योर फ्रेंड्स, तो इनका नाम लेना है. एंड ट्रस्ट, डोंट, आई मीन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी थिंक अबाउट द हेटर्स आल्सो. ठीक है, सो योर हेटर्स आर नॉट योर फ्रेंड्स. ठीक है, सो डोंट टेक देयर एडवाइस इनटू कंसिडरेशन, सॉरी. Fine. So 5, 6 people who know you closely. Fine. Now what I want you to do is list down every person. Ram, Shyam, Sundar, Bandar, ठीक है, and Sikandar. Let's say. ठीक है. ओके, सो राम, इससे मेरी व्हाट मेजरली वी शेयर इन कॉमन, ठीक है, मतलब हर बंदे की यूनिक पर्सनालिटी होती है. व्हाट थिंग्स डू वी डू टुगेदर, ठीक है. राम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम है. लेट्स से आई टॉक टू हिम अबाउट मॉरल्स. लेट्स से माइट बी जस्ट वन थिंग. फाइन. श्याम से मैं क्या बातें करता हूँ, ठीक है, कि जैसे श्याम माइट हैव सम क्वर्की पर्सनालिटी, राइट. इसको शाम को घूमना फिरना बहुत पसंद है, ठीक है. सो वी माइट बी डूइंग दैट, राइट. सो वी माइट बी टॉकिंग अबाउट ट्रैवल विद हिम. फाइन. व्हाट पर्सपेक्टिव डज ही हैव, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो यहां से थीम्स देख रहे हो अपने आप निकल रही हैं. डू यू अंडरस्टैंड what all things do you do with your friends? So let's say if you come across any image tomorrow where you see two people discussing, you don't have any trigger to that, ठीक है. You might imagine one of them to be Ram or maybe Shyam, ठीक है.
सो जितनी वाइड इमेजिनेशन रखोगे, कोई भी एक बंदा सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में थीम आ जाएगी, व्हाट शुड आई राइट अबाउट. यू अंडरस्टैंड? सो इट वर्क्स लाइक अ चार्म. ओके. सुंदर के साथ हम क्या करते हैं, हम एस्थेटिक्स पे काम करते हैं. एस्थेटिक्स, ठीक है. बंदर के साथ हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ देखने जाते हैं. ठीक है, we're fond of that. Fine. सिकंदर के साथ हम लीडरशिप प्रैक्टिस करते हैं, मे बी. जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना. गो इन टू मोर डेप्थ. मैंने वन वर्ड में यहाँ पे डिफाइन कर दिया है. यू कैन टेक अप एज मच एज यू स्पेस एज यू लाइक. ठीक है. गो इन टू मोर डिटेल्स. द मोर डिटेल्स दैट यू हैव, द बेटर इट इज. फाइन. ओके. दैट बीइंग सेड, फ्रेंड्स का हो गया हमारे. ठीक है. एक और काम कर लो आप, यहाँ पे लिख लो फैमिली. ठीक है. सो फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट ऑफ विद योर फादर. ठीक है. देन यू हैव योर मदर. ऑब्वियसली, I mean, it can be the other way around. No restriction about that. But if you are too much into, chalo, let's not go there. Father, mother, your sibling, might be your sister, might be your brother. ठीक है. Grandmother. ठीक है. Grandfather. Okay. What you have to do now, दो पार्ट्स में करना है इसको. ठीक है. हाउ, what value do they add to your life? They add. ठीक है. What value you add? The second part is what value you add to their life. ठीक है. इसके अलावा कॉमन टॉपिक्स दैट यू डिस्कस और एक्टिविटीज दैट यू डू टुगेदर. जैसे फादर के साथ हो सकता है आप लॉन साफ करते हो. लॉन मोइंग. ठीक है. समझ लेना इसको थोड़ा सा, है ना. मदर के साथ व्हाट डू यू डू, मे बी माइट बी गॉसिपिंग, मे बी गॉसिपिंग अबाउट द नेबरहुड वाली आंटी, एंड कौन सी आंटी उनकी अच्छी दोस्त है, कौन सी आंटी उनकी खराब दोस्त है. ठीक है. मे बी. और यू माइट बी हेल्पिंग इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज वाला जो है, दिस इज कॉमन. ठीक है. बट ठीक है, फाइन. इट्स अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन लाइफ ना. ठीक है. थॉट्स एंड इमोशंस ज्यादा मैटर करते हैं. फाइन. सिस्टर के साथ व्हाट आर द कॉमन, हाउ डू यू ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ, व्हाट वैल्यू डू दे ऐड टू योर लाइफ. अगेन, ठीक है, मेक दीज थिंग्स यूनिक. थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि एक ही दिन में आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे. फाइन. बट यू हैव टू टेक सम टाइम, डीप डाइव इनटू इट, ब्रिंग समथिंग अप. ठीक है. टुमारो if the interviewing officer asks you what kind of relationship do you share with your mother, you should be able to tell on the basis of this, that okay sir, sometimes we gossip about what is going on in the neighborhood. We really enjoy that, because the neighborhood वाली आंटी वो तो देख के सबको फुकती रहती है. ठीक है सर, पिछले उसमें वो सिलेक्शन हो गया उसका, हमारे पड़ोसी का, एंड आंटी वाज सो फ्यूरियस. So mom does not really like that. ठीक है. So you know what kind of thought process your mom has. You talk to her on a daily basis. This reflects a lot. Might be very simplistic thing. Reflects a lot. ठीक है. Household chores में आप करवा रहे हैं. Do you feel responsible or not? Fine. What are the secrets that you might be discussing with your mother, your father? Do they know who your friends are? Do they know who is your best friend?
ठीक है, what's your father's favorite color, what's your mother's favorite dress, ठीक है, these all things I hope you understand. I mean, people have a tendency to ignore all of these things. These are very very small questions, बहुत छोटे छोटे, बहुत वैसे, बट अगर पूछ दिया गया आपके पास आंसर नहीं है, इट शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट मे बी, ठीक है, और एटलीस्ट यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर पेरेंट्स. फाइन. इन अ सिमिलर मैनर व्हाट डू यू हैव टू डू, सिस्टर एंड ब्रदर में भी सेम चीज है, ठीक है, व्हाट वैल्यू दे ऐड टू योर लाइफ. यहाँ पे आप लोग ज्यादा वो कर सकते हैं बिकॉज यू माइट बी एबल टू रिलेट, दे आर मोर और लेस द सेम एज एज यू, है ना, सिस्टर एंड ब्रदर. ओके. ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर जो है इनके पर्सपेक्टिव से, सी मोस्टली क्या होता है, हेल्थ वाला पर्सपेक्टिव. यस अपूर्वा. So I lost my my grandparents when I was quite young. और अभी मैं only in my nanny is alive, but I'm not close with her at all. ओके. सो ठीक है, नो वरीज. डज शी स्टे विद यू? No. She does not, na? ठीक है. So when your interviewing officer asks you who all are there in your family, don't need to mention if she does not stay with you. ठीक है, so that is fine. If he goes in that direction कि grandmother grandfather के बारे में बताना ही है, so mention according to whosoever was closer to you. ठीक है. Okay, for the time being. And what I would advise in the long run, get connected with your nani. ठीक है. Just, I mean, out of I know it's something which is quite far-fetched, quite idealistic. It might be. Yeah, but I think you should try it once. Sir, one more question. Yes, Akshay. Sir, as I live with my mom and my grandmother, Hmm. so last time I was asked a question that what kind of relationship you have with your grandmother, and Definitely will be okay, asked. I got there because I never thought of that question. Like, yeah, she lives with us, but sometimes she goes to my uncle's place. Then some days she come to us. So in that case, to reply and how to say, like, now I have built a quite good relationship with her in Okay. these days. Like, I had my last SSB in November. Okay. So from that time till now, I have started talking to her when I have free time and all. But still, what is expected, like what they want to know from these questions, like You have to it is okay understand. to ask हाँ बोलो. my parents, Hmm. siblings, but I don't have siblings also. I just stay with my mom and my grandmother. So I Okay. didn't understood what he wanted to know exactly from that. He wants to get a broad idea. See, what is at the center and the core of this question is your sense of responsibility, right? How much do you care about the people who live with you, who you live with, right? So, what kind of relationship do you share with them? Okay, let's say होता है कई लोगों का ना कि I mean just because there is a difference and age gap, they do not care, they do not understand what they might be the elderly might be going through. ठीक है. So most the biggest challenge when we talk about elderly people is that they feel a bit disconnected. Why? Because the current generation it's doing different kind of things than they used to do. Okay, so there is a generation gap, obviously, right? So most important thing is like make them feel connected. Looking after them might be very small things, okay, but they get happy very easily. ओके. इनको उनको ज्यादा कुछ काम तो होता है नहीं, दवाई खानी होती है दिन भर, ठीक है, दवाई खाओ, एपिसोड्स देखो, कुछ भगवान की भजन कीर्तन करो, until unless your ग्रैंड पेरेंट्स आर अचीवर्स, ठीक है, ओवर अचीवर्स में भी, राइट, दे माइट बी गोइंग फॉर मैराथन्स इन दैट केस, बट दैट इज अ वेरी लेस लाइकली सिनारियो, है ना.
So what do they do? What kind of what do they? How do they feel about things? Right? And कुछ भी घर में event हुआ, let's say your mom got a promotion. So what is your grandparents' perspective? How do they feel about it? ठीक है? Do they feel concerned? Do they feel happy? How do they feel about it? These are very simple things. You just have to understand a person, right? That is what is being asked. ठीक है? Do you care? I mean, आपको उनकी medicines का पता है नहीं पता है? कौन सी medicines चल रही है? क्यों चल रही है? When was the last time they visited a doctor? These are the kind of things you have to just take interest in their life. Try to see things from their perspective. ठीक है? जैसे कि आप अपने भाई बहन के साथ करेंगे. Your brother might be in class 12th, right? Boards might be like he or she might be appearing for boards. Do you care what's happening and how is he preparing? How is she preparing? ठीक है? Or does she or he have a girlfriend or a boyfriend for that matter? Fine. What is their passion? Are they actually exploring? Are they developing an all-round personality or not? What kind of problems they are facing, है ना? And you might have faced also. So I hope you understand. As soon as you start taking interest in your parents' life or any other person's life, ठीक है? It does not have to be. हमें एक feeling आती है कि क्या हम वो कर रहे हैं. So don't do it for the SSB in specific, right? Just do it for the betterment of that person. Then you would be doing something. Fine. उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये मतलब what the examiner is asking, right? You have a working relationship with XYZ person, any person. You'll be able to define it. ठीक है? This is what we have to do. Family. ठीक है? Okay. Now, अब family का I hope so far we have understood. We're on the same page. I hope, right? एक step और आगे बढ़ते हैं. We come to our teachers. ठीक है? So now see, teachers are people who have seen your personality evolve over time, right? So यहाँ पे क्या करना चाहूँगा ना, मैं आप लोगों को क्या असाइनमेंट दूंगा कि क्लास केजी से 5th तक के, सॉरी केजी टू 5th तक के, आई एम कीपिंग अ ब्रॉड रेंज. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी तो मोटी मोटी ना रॉ होती है थोड़ी सी. केजी से लेके 5th तक काफी you know what I said, right? You display your personality in a very unabashful, very proper, careless manner. ठीक है कि आ रही है तो आ रही है. Fine. So इनके recall your teachers. ठीक है? Individually. Try to recall these teachers individually. ठीक है? वो क्या पहनते थे? What did they wear? Devil is in the details. ठीक है? You try to recall these details, you'll end up recalling most of the things. ठीक है? What did they wear? What did they teach? ठीक है? कोई स्पेसिफिक ज्वेलरी, मतलब जैसे एक आई रिमेम्बर क्लास 3rd में आई हैड अ टीचर, गिरजा मैम. ठीक है? So she was a resident of Jammu and Kashmir basically, and she was a class 3rd class teacher. उनके ना झुमके मुझे बड़े स्पेसिफिकली याद है. she had these long सोने के long मतलब झालर टाइप के कुछ whatever it's called, right? So she had those kind of earrings. ठीक है? They would go up till here. ठीक है? यहाँ से भी ऐसे करके लटकते थे, फिर कान में आते थे और कान से नीचे लटकते थे. This is how it was. ठीक है? Why do I remember this now? So when we had gone to a picnic, ठीक है, to the rail museum, so me being a naughty kid,
I was creating trouble. ठीक है, and she was scared because मैं छोटा मोटा trouble create नहीं करता था, जाहिर सी बात है. So she gets to know what trouble I'm creating. Fine. She comes, she calls me. आते ही ना उन्होंने एक चाटा घुमा के मारा और सर घूम गया ना ऐसे वापस. I looked back at her. The only thing that was moving were those झुमका. ठीक है. So I hope you understand कि what are the specific things, that mannerisms that they displayed. ठीक है. What was their opinion about you? Fine. So KG से 5th तक के जितने भी आपको टीचर्स याद है, do this. Okay. Then we go to the senior wing. 6 से लेके 10 तक का एक अलग फेज रखते हैं. ठीक है. Here you try and recall these things for each and every teacher. Okay. The same things. 6 से 10 तक typically what happens is, like, you start hitting puberty. ठीक है. There are hormonal changes. Fine. And they display in a different, differently in each and every person. Fine. So some people have a tendency to, deviate from their studies. Some people have a tendency to do this, do that, right? In general, excuse me, what was your true personality? ठीक है. अभी देखो क्या है ना, अभी क्योंकि मैंने आपको लिखने के लिए बोला है, what you have to do, divided into 2 parts. ठीक है. One being the true response. ठीक है. बिकॉज क्या होता है ना, हम सोचते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि इंटरव्यू में बोलना है, नहीं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इस पर्सपेक्टिव से लेके चलते हैं. सो कीप दैट इन वन सेपरेट पार्ट. ठीक है. समथिंग, फर्स्ट पार्ट इज द ट्रू रिस्पॉन्स. ठीक है. सच्चाई क्या है. द अदर वन वुड बी द ऑफिशियल थिंग. ठीक है. बट द ट्रू यू would help you, get a sense about your own personality, get an understanding about your own personality. Fine. खासकर यहाँ पे सब्जेक्ट की चॉइसेस करेंगे आप. ठीक है. बिकॉज क्लास 10th में आपने सब्जेक्ट चूज करे होंगे 10th के बाद. ठीक है. क्लास 11th में. सो इट्स इंपॉर्टेंट व्हाई यू चोज दो सब्जेक्ट्स. ठीक है. नाउ पीपल हैव अ टेंडेंसी, देखो पता है क्या होता है यहाँ पे ना, आपको क्या लगता है आपकी हॉबीज में इंटरेस्टेड है वो, देयर आर n number of candidates appearing in front of him. ठीक है. ऑन अ डेली बेसिस. सो क्या हर एक हॉबी के बारे में उसे पता होगा? नहीं. बट व्हाट कॉमन क्वेश्चन कैन ही आस्क टू ईच एंड एवरी पर्सन इज, व्हाई डिड यू चूज दिस हॉबी? नाउ दैट व्हाई इज वेरी क्रूशियल, एंड वो आंसर कहां से आएगा? वेयर विल इट कम फ्रॉम? इट विल कम फ्रॉम हियर. ठीक है. यू हैव टू बी एबल टू रिकॉल दोज इवेंट्स. कि लेट्स से बास्केटबॉल मैंने चूज करा. Like if I were to tell you my story, how I got into basketball. Basketball has a very significant, place in my life. ठीक है. This is where I've learned teamwork. This is where I've learned to explore my own potential. ठीक है. This is where I've learned individuality, how to balance it with teamwork. ठीक है. I mean, first you have to be a part of the group. So you have to abide by certain rules of the group. ठीक है. उसके ऊपर यू हैव टू शाइन आउट इंडिविजुअली. ठीक है. इफ यू ट्राई टू डू दैट विदाउट स्टिकिंग विद द ग्रुप, देन यू कम अक्रॉस एज अ सेल्फिश पर्सन. ठीक है. एंड इफ यू आर टू मच डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप, देन यू बिकम समवन हु इज नॉट केपेबल ऑफ लीडिंग, हु इज अ फॉलोअर मोर और लेस. ठीक है. ऑल्दो वहां से I mean, a good leader is always a follower, and followers, they have a tendency to become a good leader. ठीक है. But down the line you might become a good leader. ठीक है. So you will have to find out. First part is correct. If you are able to stick with the group, if you are able to abide by the group, okay, you know what's happening in the group. So point is, I wanted to tell you guys a story. Now when I was in class 5th, I used to play football. ठीक है. ओके. सो 5th तक हमारे स्कूल में भी खेला जाता था.
and we had two wings in our school. Fine, one is the junior wing, which is KG to 5th. The other one is senior wing, which is 6 to 12. ठीक है. तो जूनियर विंग में फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था. वहाँ पे हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, मन भी लगता था. ओके. सो अब क्या होता था ना, शाम में आफ्टर स्कूल आवर्स वी यूज्ड टू गो एंड प्ले फुटबॉल इन द सीनियर विंग. ठीक है, छोटा ग्राउंड था बट वी यूज्ड टू प्ले देयर. वहां पे क्या था, बास्केटबॉल कोर्ट भी था. So now this I'm telling you about when I was about to transition from the junior wing to the senior wing. ठीक है. I went there. I I was playing football and there was this one guy. He was very बदतमीज किस्म का लड़का. ठीक है. फाइटिंग वाइटिंग करने लगा. And I taught him a lesson. Yes. ठीक है. सबसे करता था वो. So we all, I mean, mutually we sort of boycotted him. Okay, so but anyway, I was pissed about it. So I just thought ki okay fine, today I do not want to play football. Let me just see what basketball is all about. I've seen a lot of people play over here, right? I have never played, है ना? So I just wanted to experience. Okay, what is it about? What's the hype? What the hype is all about? So I went there. एक आध दो को जानता था मैं. And they used to play well. मेरी एज के ही थे. ठीक है. They asked me to try it. I tried. I could not do it what they wanted me to do. ठीक है. I failed miserably. Yeah, they laughed it off. They made fun of me, and that is when it stuck with me. मैं कहा अब तो ये करके दिखाएंगे. ठीक है. That is how the madness started. Cut to 5 years, 6 years, 3 years down the line, I was in the school team. ठीक है. 4 years, 5 years down the line, I was I was the captain of the school team. Okay. Then I went on to become the captain of the college team also. Represented the team at district level, zonal level, university level, college level. Fine. So this is how it all started. So why of any hobby is crucial. Do you understand? What has it taught you over the years? What role has it played? ठीक है. तो लोग कोड साइज तो याद कर लेते हैं, ये सब चीजें याद कर लेते हैं, बट दे डोंट गो इनटू द कॉन्सेप्चुअल डेप्थ. दिस इज व्हाट इम्पैक्ट हैज इट हैड इन योर लाइफ, राइट? सो रादर देन आई मीन यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज थिंग्स ना, कि रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए. आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या रहा है उसका, क्या चीजें सिखाई हैं उसने. एज आई सेड कि आई लर्न टीम वर्क, I learned importance of skill set. A lot of things it has taught me. So about each and every hobby, you should also have that. Okay. Anyway, so coming back, so 6 to 10th वाले, do you understand? I mean, there are a lot of tangents जो यहाँ से ही निकल जाएंगे. ठीक है. So this part is crucial. Trust me. इधर ना जाके आप लोग try and recall the teachers का perspectives. ठीक है. What did they think about you? फाइन. एंड टीचर्स और फ्रेंड्स को ना यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं. जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, कुछ आपके, और टीचर्स उस टाइम पे वो ऑब्वियसली इस वाले पार्ट में ही रहे होंगे. ठीक है. फिर देन वी कम टू द सेम 11th to 12th वाला पर्सपेक्टिव. ठीक है. 11th to 12th में ऑब्वियसली अब पर्सन गेट्स अ बिट मोर सीरियस देन ही इज थ्रू आउट हिज स्कूल लाइफ. एंड 10th में एक सीरियस रहेगा, 12th में सीरियस रहेगा. ठीक है. What have you done over here? Again the same questions. Point is going to the depth of these things, right? हमें at the end of it, what do we have to do? We have to see things from the teacher's perspective. We have to try see their perspective. Okay, this has to be done. Importantly enough. Okay, guys. These are very general. What should I say? These are very general things that people have a tendency to miss out on. We will not. ठीक है. इधर से भी हम themes निकालेंगे. Fine. That is the goal. Okay. Here, from here also we can build up a lot of stories.
जनरली क्या होता है ना, आई मीन सी आई विल शो यू सम एग्जांपल्स. Yes, so this is I'll show you a neutral image first of all. अरे कहाँ है? Okay. Is that no neutral image? I don't have a neutral image over here. I think. चलो ठीक है, ये मान लेते हैं neutral image. ठीक है. And this is a neutral image actually, because you don't know what these two people, how these two people are related. ठीक है, they might be friends. They might be brother and sister. They might be colleagues. ठीक है. The background also is not well defined. ठीक है. Is it a company park? I mean, आपके the company that you're working in, is it that company का park? ठीक है. Is it your neighborhood वाला park? Where is it? है ना? So neither the background nor the characters are set. ठीक है. तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक थीम अगर आपको डालनी है, this person is seems to be a bit concerned. ठीक है. So what you can do, you can go back to that friends वाली list, pick up one of those friends, right? And now that you remember कि ये चिरकुट कैसे कैसे problems में फंसता है, ठीक है. राम is troubled. अच्छा, कुछ let's say he is going to a new place, he is not able to abide by his morals, ठीक है. और maybe he is forced into I mean, you know, he is not being able to adapt, let's say, or he might be something or the other might be like, you know, troubling him. That's why he is in a, or she is in a negative mood. Okay, so you try to resolve that. Right now we'll have to see what kind of problem we are creating, because it should not be over the top. It should not be a Nike story, obviously, right? So that we'll have to see. Okay. ठीक है. So that being said, let's get to the review part. I hope आज का जो significant चीज़ें मैं देना चाहता था वो मैं I hope I have conveyed. Fine. Major areas related आप लोगों को कोई भी doubts हैं तो पूछें अभी. Where is it? Yeah. हेलो. हाँ हाँ बोलो. Am I audible? Yeah yeah. हाँ sir, the second part, the value added I in the in the my in my father. Okay, तो ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये जो सेक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं रहेगा ना सर? इसमें एक दो ही पॉइंट आएंगे कि मतलब जैसे मैंने उनको तो मतलब जो हेल्थ के बारे में उनको बताया कि ही इज नॉट हेल्थ, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि फिटनेस फ्रीक नहीं है ये, मतलब कि वो हेल्थ के बारे में ज्यादा वो कंसर्न नहीं है, और मैंने उनको बताया, तो ये वैल्यू ऐड की ना मैंने. सो इज दिस लाइक एग्जांपल? नहीं यार, देखो पता है, the thing is कि being a person who has already seen life, right? So he is also aware कि health कैसी होनी चाहिए, ठीक है. But if he is not able to do it, he might be limited by some constraints. ठीक है. So I would urge you to get to the bottom of it and, like, you know, take some action somehow, like, you know, make it I mean, you know, change a bit of his lifestyle. So explore that, ठीक है. उसके बाद तेरे को अच्छे से पर्सपेक्टिव लिख पाएगा उसमें. ओके ओके, गॉट इट. ठीक है. यस साक्षी. Sir, you told about the major areas and all those things. So I have doubt कि मतलब major areas we are going to, you know, relate in our TAT stories और अपने आप से वो सब. लेकिन सर उस पॉइंट पे इतना सब मतलब नहीं याद आता है. लाइक यू ऑल्सो नो, सब प्रेशर रहता है, और तब उस हॉल में हम जब बैठते तो वो उतना याद ही नहीं आता है कि यार ये भी तो हम लिख सकते थे.
So what should we do for developing that thing? Like, after coming out of that hall, you get a lot of stories in your mind. You get, number of good stories in your mind. But वो वहाँ पे वो सब चीजें ये करने के लिए मतलब what is a proper way to practice or how to develop that thing that you will get that particular story at that point of time. I'll tell you. देखो, right now we're not at SSB, right? But still, if you think about it, so I think you are not able to remove the SSB wala perspective in daily life. Okay, that is why might be taking. I mean, there is a tendency that we have a tendency to lose calm. ठीक है, जब प्रेशर थोड़ा सा आता है सो कामनेस थोड़ा लूज कर जाते हैं, नॉर्मल सी बात है. बट इफ यू लुक एट एनी फॉर्मूला वन ड्राइवर और लेट्स से एनी फॉर्मूला वन रेसर, ठीक है, so driving becomes a second nature to them. ठीक है, so our goal is to be able to highlight our personality in such a manner wherever you're going you are able to. क्या होता है ना, जो recommend जब होता है बंदा जिसको खासकर साइक में प्रॉब्लम आई है और उसने वर्क करा है ना, start seeing stories on a day to day basis. ठीक है, तो I mean I was For example, sir, हाँ like I didn't understood this point. For example, मतलब day to day basis पे I didn't यार डे टू understood डे that. एक्टिविटीज पे उसको स्टोरीज दिखती है ना. ही वाज गोइंग इन अ, आई मीन वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज विजिटिंग, ही इज अ कैप्टन अभी सर्विंग, ही इज सर्विंग. सो कुछ एक्सीडेंट होने वाला था सामने, एक आध बंदे, ठीक है, उसने उस पे ही स्टार्टेड मेकिंग अ स्टोरी कि he was with one of he was meeting of one of his friends after a long time who had shared a phase of preparation with him. They were going on I mean they were going to enjoy their time when they saw an accident happen. So I hope you understand. I mean this is how just one of the examples. Okay, you can use any of your events, any of the events of your life to make a story. ठीक है, एक ये वाली चीज देख. दूसरी क्या है, आइडियाज. इफ लेट्स से यू आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली इन द एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में तेरे को तुरंत कोई चीज याद नहीं आई, सो दैट मीन्स यू हैड लैक ऑफ प्रैक्टिस क्लियरली. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू अप्रोच एन एग्जाम विदाउट practicing too much, it has a tendency to shatter your confidence. ठीक है, that might have been the case. I mean होता है कई बार. So point is do not approach an exam without practice. और अगर आपने practice के बिना approach कर रहे हैं, don't take it very seriously the results. Fine, because you have people have a tendency to misinterpret themselves on the basis of that. ठीक है, point is how do we improve the TATs in the long run? We expose ourselves to good ideas. ठीक है, we try to ingrain them in our subconscious. ठीक है, so that they come out very naturally. ठीक है, so the solution is, question is देखो अगर मैं अच्छी स्टोरीज नहीं लिख रहा, is it true that I will never write good stories? No, I don't think so. If I choose my company wisely, ठीक है, if I get influenced by good ideas, good thoughts, positive thoughts, reinforcements, if my parents are encouraging, ठीक है, then I will go on a path which is positive. ठीक है, so I hope that answers your question. ठीक है, वो उसमें नहीं निकल के आता है. फॉर्मूला वन वाला एग्जांपल क्यों दे रहा था मैं, क्योंकि एनी फॉर्मूला वन ड्राइवर ऑल्सो इफ यू लुक एट देम, सो व्हाट डू दे फर्स्ट learn to drive at a slow speed. ठीक है, once they know all the nooks and corners, that is when they can really put the pedal to the metal. Fine, so I hope you understand. You start off slow, you develop your thought process. पहले अपने आप को समझना जरूरी है, तब जाके आप टाइम प्रेशर में भी परफॉर्म कर पाओगे. ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज crucial first of all. Okay,
that is why we are organizing all of this into so many things. ठीक है, you once you are able to micro analyze all of this, अपने आप कोई ना कोई एक well defined thought आ जाएगा. ठीक है, that is more than sufficient in order to, बाकी बंदे नहीं करके आ रहे ना, आपकी स्टोरी अलग चमक जाएगी. So you don't need to worry about too much about it. चलो, let's not go any more in that portion because अभी भी आज की स्टोरीज रिव्यू करनी है जरा. ठीक है, ओके. एनी अदर क्वेश्चन अबाउट मेजर एरियाज वाला पार्ट? ठीक है, सो यहाँ पे any other thing that might set you apart. ठीक है, it might be achievement also, anything. ठीक है, you are definitely not limited by only these things, right? Decision making, why I'm saying this कि because decision making के around भी कुछ चीज, as an officer you have to definitely you have to make decisions. So how conscious are you around decision making, right? Do you let them get influenced by your emotions or not? And decision making is another uh, area we will explore later on. ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे. For the time being इतनी चीजें कर लो ना, that will be more than sufficient. Fine, okay. So starting off with the reviews now. Okay, just a second. Okay, so we'll be starting off with Apurva. ठीक है, just a second. Okay, so this is on the. Acha, while we go through the stories, what I want you guys to do is open the psych set that Apurva has used, है ना? So मैंने कल जो शेयर करा था फीमेल वाला वो जो PPTX है, ठीक है, set 2, and we'll be looking at the images, ठीक है, and यहाँ पे we'll see the stories what Apurva has written. ठीक है, okay. So the first images, I hope you guys can see. There are two girls. They're in front of an institution, might be a college, might be a school. ठीक है, and one of the girls is holding a bottle. It appears as if she's saying something authoritatively, right? I also have to look at the non-verbals, right? So इसका waist पे है तो power pose है. This is a power pose. ठीक है, the other person has both palms facing the other person. ठीक है, so that shows कि मतलब intent show कर रही है वो लड़की. ठीक है, so this is like harmless वाला. Whenever you are trying to connect with someone, ठीक है, and show your true intentions कि okay, the intentions are clear, you do not need to take me as a threat. ठीक है, so that is this thing. Explanation वाला generally ये वो होता है. ठीक है, okay, right. So ठीक है, let's take a look at the story now. Okay, so Kavita is a third year student at IIT Lucknow studying computer science. Okay, ठीक है, perfect. PIQ से connect करा. Okay, one day on the notice board, she sees about upcoming inter-hostel hackathon. Okay, immediately rushes to Shalini, her
batchmate also does Android development. Together decide to enter the competition. The project timeline of making an app which addresses college hostel grievance. Okay. Uh, Kavita wrote the backend code and wrote the front end code. Okay, they also asked their friend some of the app. What is this? Run the app. Hanji? Run the app. Acha, run the app. Okay, run the app and give feedback. Okay, the changes according to feedback. Week later, they submitted their app and won the hackathon. Okay, also entrusted with the responsibility of implementing the campus-wide entrusted with the responsibility of campus-wide, sorry, campus-wide. Okay, they expanded their team to 5 members and did the implement. See, ठीक है, idea in itself might be okay, ठीक है, but it appears to be a preconceived story. ठीक है, it is nowhere close to what is being portrayed in the picture. ठीक है, apart from the fact that they might be friends and college वाला thing, यहाँ तक ठीक है, right? But you can see that they might be in workout वाला uh, uh, वाले कपड़े, ठीक है, and this girl has a bottle in her hand, ठीक है, so then the chemistry that is going on between them, so that she might be saying something and she might be the other person might be agreeing to it, ठीक है, so what conversation are they having? Problem is you have not put yourself in these characters' shoes. ठीक है, यू हैव नॉट ट्राइड टू सी थिंग्स. आई मीन तू अपने हॉस्टल के सामने कब खड़ी होगी, व्हाट विल यू बी डिस्कसिंग. ठीक है, चलो हॉस्टल वाला भी चीज एक चीज आ गया, ओके ठीक है, इंटर हॉस्टल हैकाथॉन की बात हो रही है. यहाँ पे योर मेजर स्टोरी का मेजर जो एक्शन है दैट इज अराउंड प्लानिंग एंड कोडिंग. ठीक है, rather than discussing the plan. If you were to modify the same theme and you would go on more of a discussion around the same thing, ठीक है, कि hackathon is coming, they are having a to and fro discussion after college hours. ठीक है, so if you elaborate a bit more on the discussion part, then that would be that would make your story perfect. ठीक है, Okay. एंड फीडबैक वाली चीज इन पे ये भी रखना है बट फ्यूचर में रखना है. ठीक है, थोड़ा 363 वाला अप्रोच, 363 अप्रोच हम डिस्कस करेंगे बाद में. ठीक है, 363 या 1 to 1 बेसिकली क्या होता है ना, 363 मत याद करो, 1 to 1 याद कर लो. ठीक है, एवरी 4 लाइंस दैट यू राइट, ठीक है, 2 शुड बी द करंट एक्शन, ठीक है, 1 शुड बी द बैकग्राउंड, 1 शुड बी द फ्यूचर. ठीक है, तो 1 to 1 वाली अप्रोच है. ठीक है, एक लाइन आप बैकग्राउंड में लिखेंगे तो 2 लाइन आपको करंट सिनेरियो में लिखनी है, व्हिच इज लाइक यू नो व्हाई आर दे व्हाट आर दे डिस्कसिंग, व्हाट्स हैपनिंग करंटली. ठीक है, तो आइडिएशन पार्ट गुड, स्ट्रक्चरिंग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, स्ट्रक्चरिंग, दैट्स इट. Yeah, I struggle with that. Structuring में I often struggle. मेरे साथ हो जाता है कि if I'm writing a story, हाँ. मुझे पहले क्या लिखना चाहिए बाद में आ रहा होता है. Like ऐसा होता है कि 2 लाइन लिख दिया फिर मुझे स्ट्राइक करता है, अरे यही लाइन इसके इनके पहले लिख दी तो बेटर हो जाता. I struggle with that a lot. डू यू मतलब जैसे इमेज दिखाई तेरे को, ठीक है, 30 सेकंड, उसके जस्ट बाद जैसे ही 4 मिनट चालू हुए, डू यू पुट योर पेन डाउन? नहीं, अभी मैंने पहले करती थी. अभी आई ट्राई टू स्ट्रक्चर इट इन माय हेड, बट अभी आज मैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रैक्टिस थी तो मैंने राइट अवे लिखना शुरू किया था. ओके, ठीक है, नो वरी. ठीक है, स्ट्रक्चरिंग वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस अभी फ्रॉम द फर्स्ट स्टोरी इटसेल्फ दैट वी कैन गैदर. ओके, कमिंग टू द सेकंड वन, what do we see? Let's everyone, let's take a look at the second image, है ना. So there is one person in the background. ठीक है, he appears to be, it appears as if he might be the son or a daughter. ठीक है, and he is looking at the parents sitting in the um, sitting in the hall. ठीक है, पीछे से something is happening, they might be having some sort of discussion.
ठीक है, और these might be guests also, fine, and बाहर से आए हैं ये लोग मिलने, let's say बैकग्राउंड में वो लड़का खड़ा है, ठीक है, एंड हो सकता है मिलने आया हो, whatever be the case. Okay, that being said, let's take a look at the story. Okay, it appears that as if these two grown-ups, they are discussing something, they're talking about something, okay, and this person is intently like looking at them. So maybe he might be waiting for them to finish up their talk, whatever. Fine, let's take a look at the story. So Nana is a 20-year-old girl. She is a middle sister. Okay, interesting. She is discussing with Soham. Acha, okay. So the person who was the girl who is at the front of the picture, that is Sunaina, है ना? Okay. Soham, who is her elder brother, age 24. Okay, about celebrating their youngest sibling. What is this? Shobhit. Shobhit. Okay. Shobhit's birthday. Sunaina and Soham discuss and divide the task among themselves. To take care of decoration, catering and cake. See, okay, ठीक है, चल पूरे पहले पहले पढ़ लेते हैं. Sohan takes the Same as decoration. above. Same problem as above. Yeah, है ना? So you've taken a, I mean जो dynamics है ना current picture की, characters की आपस में जो dynamics है, Hmm. वो कैप्चर नहीं कर रही है स्टोरी. Hmm. ठीक है कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है. बेस लेयर तो अच्छी बन रही है, ठीक है कि मतलब थीम ही बढ़िया सेट हो रहा है. उसके ऊपर जो आई मीन जो चीज आपकी कनेक्ट कराती है ना स्टोरी से, पिक्चर से, वो चीज बस थोड़ी सी मिसिंग है. बाकी आई थिंक द आइडिया इटसेल्फ इज फाइन, है ना. बाइंग गिफ्ट फॉर शोभित एंड रिटर्न गिफ्ट फॉर द अदर किड्स. यहाँ पे ही तूने बोला होता ना कि लाइक while they were discussing what task they should do, Shobit suddenly appeared and हाँ. through the corner of her eyes she saw that Shobit had come, है ना. So hush hush they quickly changed the topic, ठीक है, and as soon as Shobit went back they They resumed the discussion. resumed the topic, है हाँ, ना. got it. So just these quirky small समझ गई. little things, है ना. हाँ. Base layer is fine. Sunaina calls a friend to help with the preparation. Comes to help. Okay, the party and celebration start. Shobit is Yeah, मतलब if I had added that line, it would have made sense better. and enjoys his birthday. ठीक है, thanks his friend. Okay, ठीक है, makes sense. Okay, right. ठीक है, third one, there is a doctor who appears to be a doctor. Compounder भी हो सकता है वैसे, ward boy. ठीक है. I hope it's visible to you guys, ना. ठीक है. Okay. And there is this one elderly woman. Elderly भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, but elderly लग रही है वैसे. हाँ. ठीक है, चलो देखते हैं. Anurag is a fourth year medical student. He had duty in the general ward. ठीक है, excellent. What Apurva has done here. ठीक है, yesterday also we talked about this. You choose the character who is more capable in the picture. ठीक है, you do not want to pick up someone who is handicapped, है ना. क्या करोगे आप उससे? पैरालंपिक्स में वो करो. आई मीन नॉट ऑब्वियसली नॉट मेकिंग फन ऑफ दैट पर्सन, बट that person might not be well equipped to handle the situation which is required at the moment, है ना. If you become a child, जाहिर सी बात है, you are shunning away all responsibilities when you have an option, ठीक है, to choose. I hope to understand कि you go with whosoever is in a in a better place. Medical student, he had duty in the general ward. When he was administering dosage to Sheila Devi, a 55-year-old patient, he noticed she is scared. Okay, this is better. Okay. Anurag keeps the syringe aside and talks with her.
and makes her feel comfortable. Okay. Talks to her about her family and engages her in conversation about her grandchildren. Sheila Devi soon starts, just 1 second, Sakshi, soon starts relaxing. Observing this, Anurag convinced her for the syringe, agrees, administers the dosage, okay. Also inquires if she has any queries. She shares them, he answers them, okay. Moves on, next patient, okay. ठीक है, तो ये वाली जो है ना, ये वाली एडिशनल थी, थोड़ा सा वेग भी है, ठीक है, ये वाली लाइन वी कुड हैव लाइक या तो स्पेसिफिक डिटेल्स ऐड कर दे, है ना, अदरवाइज इज जस्ट रिडंडेंसी, हाँ ठीक है. राइट. सो बाकी आई थिंक द स्टोरी इज ओके, सिंपलिस्टिक, इफेक्टिव, टू द पॉइंट. यस साक्षी. So do all the write the same stories? हाँ जी. Because you know what, she has written the first story and the third one. हाँ. The story which she has written, the first one and the third one, is the same as I have written. So Okay. do all repeaters, you know, have a That's fixed concept in their mind, that's or the is point. it? So see, I hope you understand the challenge that is in front of you now. And I hope you understand the challenge that lies in front of you. You really have to make your stories a bit innovative, or at least try to make them otherwise how will you stand out, है ना. ये क्वेश्चन होता है, ये एक चैलेंज होता है जनरली रिपीटर्स के सामने, या anyone who wants to get selected, he or she has to give something which is a bit different. How will you do that, है ना, because each and every person is different. So मेजर एरियाज यहाँ पे अगर आप इंक्लूड, इफ यू कैन समहाउ अकोमोडेट दीज थिंग्स, राइट, दैट इज वेयर द मेजर एरियाज पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर. ठीक है, एक बार मेजर एरियाज वाली लिस्ट बना लो, बनाना चालू करो, एंड देयर आफ्टर आई हैव असाइनमेंट्स फॉर यू गाइस व्हिच यू हैव टू डू. ठीक है, मेजर एरियाज एक बार आपके सेट हो गए ना, उसके बाद देयर आर सम रिसोर्सेज दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस. एक तो है द बेटर इंडिया, ठीक है, दिस इज अ यूट्यूब चैनल, फाइन. देयर इज डाउन टू अर्थ, दिस इज ऑल्सो यूट्यूब चैनल, ठीक है. और न्यूज़पेपर्स, ये 3 सोर्सेस है ना. वी हैव टू कलेक्ट स्टोरीज विच आर कनेक्टेड विद आवर मेजर एरियाज. ठीक है, मेजर एरियाज में से हमें इसमें लेट्स से if you have some extracurricular activities, done some extracurricular activities, maybe you might have been the secretary of a panchayat. Yeah, so you go find those areas, you go find some new ideas. इन द बेटर इंडिया क्या है ना, बेटर इंडिया में 5-10 मिनट्स में आपको एक शॉर्ट स्टोरीज शेयर करी जाएंगी, ठीक है, यूट्यूब पे, आई मीन इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस. ठीक है, डाउन टू अर्थ में अगेन एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंटलिज्म के अराउंड आपको ये चीजें मिलेंगी. ठीक है, न्यूज़पेपर में जनरल चीजें आती है. न्यूज़पेपर में से अभी हम कल एक बार ये टॉपिक उठा के ना कि व्हाट डू शुड आई पिक अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर, दिस विल डिस्कस टुमारो. ठीक है, so that is why the major areas comes into the whole scenario ना. How will you tell a different story, है ना. कुछ चीजों के तो जनरल रिस्पॉन्सेज होते हैं डेफिनेटली, बट आई मीन यहाँ पे कुछ हम अलग अप्रोच भी लेके चल सकते थे ना. वैसे तो देखो मोर और लेस सिमिलर आती हैं. देखो देयर इज अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज. आई मीन देखो क्या होता है, एक पिक्चर के अराउंड जनरली 3 या 4 टाइप की स्टोरीज ही देखने को मिलेंगी. ठीक है, बट द वे दैट पर्सन हैज कन्वेड दिस मैटर्स. ठीक है, कि आपको सेट अपार्ट क्या करेगा, 2 चीजें करेंगी. एक तो आपका कंटेंट मेन, तो एक तो आइडिया क्या दे रहे हो वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है, यूनिक तरीके से आप क्या कर रहे हो. दूसरी चीज थॉट्स एंड इमोशंस कैसे करेंगे. ठीक है, लाइक शी इज रिटन, शी नोटिसेस दैट शी इज स्कैर्ड.
ठीक है, when she was administering doses she notices that she was, यहाँ पे thoughts and emotions बड़े अच्छे तरीके से निकल के आ रहे हैं, which is good. ठीक है, so this is the kind of flow that you want, right? So this will set you apart from the other repeaters. ठीक है, they'll right away jump to this action part. He consoled her, he did this, he did that, ठीक है, he even gave her chocolates. ठीक है, this I mean you guys are already aware कि क्या क्या लिखते हैं बंदे, है ना, लोग क्या क्या लिखते हैं. Thoughts and emotions is what will first level of filter. What will be the first level of filter? ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है, जो कि 12 स्टोरीज में से ना जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्टोरी में करो, लेकिन 5 से 6 स्टोरीज में भी आपने कुछ इनोवेटिव कर दिया है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. उतना तो हम कर ही सकते हैं ना, आराम से कर लोगे, ट्रस्ट मी. इफ यू गेट एक्सपोज टू 10, 15, 20 आइडियाज, न्यू आइडियाज ना, तो 5 से 6 उसमें से निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स कि मतलब वहां पे इज इट वेल सूटेड और इज इट नॉट, दैट इज द ओनली क्वेश्चन. ठीक है, सो ये 3 जो रिसोर्सेज जो है ना, ये कल मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. ठीक है, आई विल आल्सो डिस्कस इन डेप्थ न्यूज़पेपर से कैसे क्या उठाना है. ओके, राइट. सो दैट बीइंग सेड, अपूर्वा की 3 स्टोरी आज तीन ही देखेंगे अब, ऐसा हम जनरली क्या है. ठीक है, बाकी सारे जो है हम बाद में रिव्यू कर लेंगे ओवरऑल. ठीक है, सर ये जो टीपीआई यूट्यूब चैनल बोला, क्या था नाम उसका? दिस इज द बेटर इंडिया. ठीक है, द बेटर इंडिया, डाउन टू अर्थ. I had a question. हाँ पूछो साक्षी. The same one as I asked you before, that should we practice a story daily, or it will fabricate our responses? Like, I'm confused in that point, because many of my friends also told me that if you practice more stories, your response will be get fabricated, and there will be no original response in the psych test there. That will happen. So That will happen. ठीक है, so मैं क्या yes. बोलता हूँ ना, मैं that is why I ask students to only write 2 to 3 stories. ठीक है, 2 to 3 stories, उसमें क्या करना है ना, मेनली कोई नया आइडिया निकाल के लेके आना है. ठीक है, यू हैव टू, जैसे लेट्स से न्यूज़पेपर से कोई एक आपने आर्टिकल पढ़ा. ठीक है, आई विल शेयर सम आर्टिकल्स, ट्राई टू समराइज इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. ठीक है, you share that. So goal is to get exposed to new ideas, formulate them and put them in the form of a story. Practice that. ठीक है, स्टोरी राइटिंग इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए. You get exposed to new ideas. ठीक है, try to summarize them. दूसरी चीज, अगर आपको टाइम बेस्ड मैनर में करनी है तो एक आध कर लो स्टोरीज ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, लास्ट में क्या करना है कि एक मॉक लगा लो, मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे हम एसएसबी की स्टोरी से वो कर रहे हैं. बट आई मीन अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ज्यादा, तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है. लेट्स से अगर 6 स्टोरीज आप एसएसबी के फॉर्मेट पे डेली बेसिस पे आप सोच रहे हैं कि 6 स्टोरीज में प्रैक्टिस करूंगा, व्हाट शुड यू प्रैक्टिस? कनेक्टिंग देम विद योर मेजर एरियाज. ठीक है, रटी रटाई स्टोरीज नहीं निकालनी है हमें, rather we have to try and connect them with major areas, any of the major areas. ठीक है, yes अपूर्वा. So जैसे कि जैसे कि the first story I connected with major area, college में participation and everything, and वो थोड़ा सा preconceived होने लग गया. अच्छा, And हाँ, okay. that's something I struggle with, क्योंकि if I'm relating something to a major area ना, तो I have a lot of information to share, और वो preconceived लगने लगती है. Okay. That story I wrote in the go only, but लग रहा था कि मैंने पहले कभी सोच के रखी होगी, वैसा फील आ रहा था. So that is something I struggle with. So how can I like हाँ, can you what? manage that? I was saying how can I manage this? Okay, ठीक है. So इसमें यार as I said कि I mean थॉट लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जब लिख रहे हो ना आप, स्लाइटली मॉडिफाई करके ही लिखना है बस. ठीक है, तो जो चेन ऑफ एक्शंस है ना, उनको उस हिसाब से ओपन अप करो जो कि आपको पिक्चर में दे रखा है. ठीक है, आपके थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट देयर मस्ट हैव बीन सम पॉइंट वेयर यू माइट हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स विद योर फ्रेंड्स. Yeah, है ना,
just elaborate on that part more. That's it. और जैसे कि सेकंड पिक्चर में दैट गाय बच्चे वाला आ गया फिर चुप हो गया, दैट लिटिल डिटेल वुड हैव मेड इट लाइक in हाँ real time rather than preconceived. हाँ, Thank you so much, definitely, Ray. definitely, So much. right. Some sort of I mean, quirkiness to connect it with the picture. मतलब पिक्चर के ना, पिक्चर में आप जब अगर होते तो how would you have like taken up the situation? Just put yourself there. ठीक है, yes साक्षी. Sir, like in my second story, I have written that they both are husband wife and discussing about their child's extracurricular activities. How will they put him in different activities, हाँ, and they will divide in between duties between both of them, and see whether he also spends time with them also in weekends. So is it going with the picture or? that is fine. Okay, that is fine. But why are you going to ये वाला perspective? I mean, it's something which is a bit beyond what your current what is currently expected out of you, है ना? You're currently not a parent, है ना? Definitely. So I Yeah, mean, so that is what I thought, that in some of the situations, like there is no option. You have to write them, as they are looking in the picture. So how to mold it, like you can go back a bit. I mean, जरूरी नहीं है कि husband wife ही हो, है ना? There can be other alternatives, right? उनका It's एज भी सब थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, so I thought it like that. यार 2 3 4 साल ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, why not? I mean, see, the thing is कि हाँ, I hope you understand ना, 19 20 तो कर ही सकते हैं ना. Yes, That is the yes, thing. yes, yeah, definitely. Should be factually correct. अब हम इतनी छोटी चीजों पे, इसीलिए जब पीपीटीटी में डिस्कशन होता है ना, तो 10 साल का था या वो 10.5 साल का था, ऐसी बातों पे डिस्कशन काम खाना वो नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है ना. 10 से 12 की रेंज ले लो, सफिशिएंट है. ठीक है, 25 से 30 की एज रेंज ले लो, मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, 20 से 25 की, 22 से 27 की एज रेंज है ना, तो मोटा मोटा इसके अराउंड रहता है. ठीक है. सो जैसे अपूर्वा ने भी अप्रोच करा, सो शी हैड अ डिफरेंट दिस थिंग आउटलाइन अबाउट इट, राइट. चलो, लेट्स टेक अप अथर्व की स्टोरीज So फॉर you नाउ. were saying that like if you are approaching 6 stories, हाँ, you were giving the pointers कि पहले major areas से relate करना, you didn't complete that thought. ओके, जस्ट अ सेकंड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. एक सेकंड देना. ठीक है, चलो. सो एज आई वाज सेइंग कि न्यूज़पेपर वाला कल रिमाइंड करा देना यार मेरे को ना. आई हैव टू डिस्कस द रिसोर्सेज कि लाइक वेयर विल यू गेट एक्सपोज टू न्यू आइडियाज. ठीक है, एंड व्हाट टू डू विद देम. ठीक है, रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है ना, कल डिस्कस होगा. ठीक है. सो 2 to 3 पार्ट्स में, एक तो टाइमिंग के बेसिस पे आपने करना है. ठीक है, 3 चीजें बेसिकली प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, एक टाइमिंग से अवॉइड करने के लिए इस पे ना अभी उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. ठीक है, पहले क्योंकि हम आइडिएशन वाला काम ज्यादा कर रहे हैं. दूसरा काम हो गया मेजर एरिया से कनेक्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट इज इनोवेशन. इनोवेशन इज बेसिकली न्यू आइडियाज. ठीक है. सो इतना, ये 3 चीज पे हमने ध्यान देना है. ठीक है, तो एक एक 2 2 स्टोरी डेली बेसिस पे इन पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सो यू आर कीपिंग इट वाइड. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. रिपीटर्स क्या कर देते हैं ना, जनता, दे they have a tendency to like just write stories for the sake of writing. ठीक है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं इसके. ठीक है, फ्रॉम वन वी हैव टू लाइक जो सी की टाइमिंग्स निकल के आ रही है या नहीं. ठीक है, द अदर वन में मेजर एरिया से कनेक्ट, जरूरी नहीं है कि इनोवेशन हो.
ठीक है। थर्ड वाला जो है ये आपने यू हैव read something, you are exposed to a new idea, you're just putting it into a story। ठीक है। सो इतने अलग अलग स्टिमुलस के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप के रिस्पॉन्सेज ना हैम्पर हो और या आपके फर्स्ट थॉट्स जो है ना वो हैम्पर हो। ठीक है। वहां पे जब इसके बाद भी अगर हैम्पर होते हैं ना, लेट्स से इफ जब मैं अपीयर कर रहा था ना एसएसबी के लिए, व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने देखी दिखाई पिक्चर भी है ना जिसमें मैंने स्टोरी लिख भी रखी है, वो भी सामने आएगी ना पिक्चर। सो आई विल ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू व्हिच आई hadn't looked at in the previous attempts in this particular picture। ठीक है। छोटी छोटी डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स, आई वुड ट्राई टू फाइंड स्टोन समवेयर, कहीं पे चिड़िया उड़ रही है, कुछ 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 कुछ। ठीक है। सो उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। चिड़िया उड़ रही है, सो आई वुड से कि अच्छा मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है। इट्स जस्ट द डॉन हैज जस्ट आई मीन द डे हैज जस्ट बिगन। ठीक है, ये बोल दूंगा और मे बी पेबल्स वगैरह पढ़े। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो आई वुड ट्राई टू ऐड समथिंग और द अदर एवरी टाइम। ठीक है। सो आई वुड ट्राई टू कीप इट स्पॉन्टेनियस। लास्ट टाइम मैंने अगर ब्रॉड थीम पे दिया है, तो इस बार व्हाट आई विल डू, आई विल मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज पोर्ट्रेड इन द पिक्चर। ठीक है। एक और अप्रोच मैं बता देता हूँ, ये तो मेरी अप्रोच है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो हैड गॉटन रिकमेंडेड व्हाट ही यूज्ड टू डू। एक पिक्चर पे ना, अब वो प्री कंसीव्ड वाला चीज बचाने के लिए ना, एक पिक्चर पे 3 आइडियाज लिखेगा, 3 स्टोरीज लिखेगा सेम पिक्चर पे। ठीक है। सो यू रियली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट स्टिमुलेट योर ब्रेन बाबा, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कि सर ये हो गया वो हो गया। 12 स्टोरीज इसीलिए दी जाती है, एक पैटर्न ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड मरे वाले जो टेस्ट हैं, आप दीज आर मरे एंड बेसिकली कार्ल यूंग का साइको एनालिसिस, उसमें डेप्थ में बात करी जाती है इसके बारे में कि मतलब हाउ टू एनालाइज ऑल ऑफ दिस। उसमें डेप्थ में आपको जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। यू गाइस डोंट वांट टू बी असेसर्स ऑब्वियसली, है ना? सो गोल क्या है, बस इतना समझना है ना। जब साइकोलॉजिस्ट इवैल्यूएट कर रहा होता है ना आपकी स्टोरीज, तो देयर इज नो स्टैंडर्डाइज format of evaluation for each and every psychologist, कि it is not uniform across the forces. You have to understand that. What is uniform is pattern recognition. ठीक है। They will try to read 12 stories, ठीक है, 2-3 stories, और उसमें से कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट सीकिंग का पैटर्न निकल रहा है, they'll say कि this person is not suitable for armed forces. Why? Because he is expecting monetary benefits out of it, and which the armed forces will not be able to provide. ठीक है। So at the end of any profit maximizing story, it should be done for a noble cause. ठीक है, maybe for charity or maybe for something. ठीक है। So you have to really keep that in mind. ठीक है। If a person has a tendency to miss out on the background, so then instructions are not clear, the person is not being able to relate with the characters। ठीक है। repetitive, not much material to evaluate। I hope you understand। so patterns जो है ना, patterns we try not to create, इसलिए हम 12 स्टोरीज लिखते हैं। ठीक है। 12 स्टोरीज में आपका ओवरऑल मोटा मोटा अगर अच्छा निकल रहा है, स्पॉन्टेनियस भी है, आइडियाज भी अच्छे निकल रहे हैं, आपको ये भी फील रहा है आप अपनी लाइफ को टच कर रहे हो, फाइन है। ठीक है। नो नीड टू माइक्रो एनालाइज इट, माइक्रो मैनेज इट। ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो। दैट बीइंग सेड, सो लेट्स टेक अ लुक एट द स्टोरी। Just a sec. Okay, so let's take a look at जो सेट शेयर कर रखा है मैंने।
ठीक है. So first image is this one guy is going, is walking upwards, ठीक है, on a slope, and there are boulders around him. It appears to be the scene of a maybe a hill or a mountain, a geographical location है, ठीक है. And he appears to be walking. Shoes formal है. Attire is also somewhat semi formal, ठीक है. So ठीक है. On that basis, let's take a look at the story. So Raj is a college going student. Okay. One day he planned to trek to what is this? Near skirt. Huh? हाँ सर, नियर स्कर्ट, Okay, near skirt. ऑफिस सिटी, Office city. Okay. With his friends. ठीक है. फ्रेंड्स. Called a friend one day before and told them to be ready with the essentials. Okay. ठीक है. With the essentials. यस. Okay. अच्छा, essential things. Okay. And meet at one spot at 6 a.m. Okay. They met and they went to the what is this? Chamberlain. सर, दिस इज द नेम ऑफ द केव, द चांबार लेनी अच्छा, Chamberlain. Okay. केव और द वन हिल, सो विच इज नियर माय हाउस सर. अच्छा अच्छा. Okay. Interesting. Hmm. ठीक है. Geographical location वाला चीज. Okay. Started the trek and within 1 hour they reached the top and had a good time. Okay. They chill and relax, return to home by evening and enjoyed the day on a good note. Okay. ठीक है. देखो, idea itself is okay. Problem कहाँ पे है? Problem here is that you in the story you are going with a friend, है ना, which does not sit well with what is shown in the image. Image में हम देख रहे हैं कि this person is going alone. ठीक है. So Yes. why is he going alone? That must be the question. ठीक है. जैसे let's say अगर चांबर लेनी आप जा भी रहे हो, ठीक है, मे बी किसी कॉलेज प्रोजेक्ट की वजह से जा रहे हो, अकेले गए, समझ में आता है, ठीक है. इट शुड बी, और आइदर इफ यू आर गोइंग विद फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स में से लेट्स से आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था 3-4, ठीक है, उसमें से आप अकेले उनको छोड़ के अकेले कब जाओगे, किस पॉइंट पे, ठीक है. जाहिर सी बात हम ये तो लिखेंगे नहीं वॉशरूम गया था, है ना, इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट. सर मतलब अगर कहीं मतलब उसे सर्चिंग तो करना हो कि ये जो लोकेशन है, मतलब जो उसके लिए इंफॉर्मेशन अगर उसको निकालना हो तो वो जाएगा उसके ओके, लिए ठीक है, कुछ राइट. टाइम. आई मीन while everyone was taking a rest, decided to take a stroll in order to look around and figure out the next हाँ. plan of action. Fine, यस एग्जैक्टली. that is fine. ठीक है. He went around the corner, stood at a point where he could observe at a distance, and वो सब देख के he returned back. That is also fine. ठीक है. But I hope you understand. You have to put yourself in the shoes of that person. ठीक है. There, you have to be there inside the picture. You have to put yourself in the picture. ठीक है. It's like, just try and imagine. आप रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है, यस. आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन में आपकी विंडो सीट है, ठीक है, ट्रेन चली, आपको दिख रहा है एक के बाद एक के बाद एक, पहले खेत आए, ठीक है, खेतों से निकली ट्रेन, उसके बाद पहाड़ आए धीरे धीरे, ठीक है, उसके बाद फिर एक नदी का ब्रिज आया, और फाइनली आप एक अपने टर्मिनल स्टेशन पे जाके उतर गए. सो इट इज ऑल्सो लाइक अ ट्रेन जर्नी ओनली, ठीक है. यू हैव टू बी एबल टू sit there, right? You have to be able to imagine, right, when we are going through all these various different things, I mean different scenarios, different sceneries. So our imagination is high, ठीक है, कि कोई बंदा हमें दिखता है तो क्या कर रहा होगा वहां पे, probably why, because we are just sitting there, है ना, just observing, यस सर. यस. है ना. सो हम ट्राई करते हैं वहां पे, एक्चुअली हमारा दिमाग काम होता है व्हेन वी आर सिटिंग इन द ट्रेन. सो वो, आई मीन, ट्राई टू गेट इनटू दैट पर्सपेक्टिव. फाइन, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ दिस पर्सन, सो गेट इनटू दैट. ठीक है, चलो सर नेक्स्ट वन. मुझे ऐसा बताना था,
हाँ जी कि सर मुझे मतलब जो स्टोरीज है ना वो बहुत बेसिक सी बन रही है. अब हाँ दिस इज अ स्टोरी एंड दिस इज नॉट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिपीटर. ओके. अगर ओके इससे मतलब जो मेरी मतलब जो फर्स्ट वाली स्टोरी है ना, इससे अच्छी स्टोरी भी बन सकती है सर. डेफिनेटली ओके. सो वो सर वो स्ट्रक्चरिंग मेरी नहीं हो रही है अच्छे से. और नहीं जो है ना कि मतलब एक्शंस उसमें मतलब तो पुट ऑन तो करने हैं, फिर हाँ, उसके बाद एक ओवरव्यू देना है, उसके बाद एक तो फ्यूचर एक्सपेक्ट भी रखना है उसका. आ तो जाएगा वो अच्छे देख से नहीं हो पा फर्स्ट रहा थिंग सर. फर्स्ट अथर्व डोंट बी टू हार्ड हम्म. ऑन योरसेल्फ यार ठीक है हाँ एग्जैक्टली. डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ ट्रस्ट मी है ना हम करने को आइंस्टाइन भी बन सकते थे हम आइजैक न्यूटन भी बन सकते थे क्यों नहीं बने हम्म. वी आर नॉट डेस्टिन्ड फॉर दैट वी आर डेस्टिन्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स है ना सो ठीक है इट्स ओके हम्म. every repeater has a different caliber what should be the end goal is you should be able to convey the thought emotions सर ideas ये जो रिपीटर का जो एस्पेक्ट है ना, जो मैंने अभी तो बोला कि आपने अभी जो मतलब तो कहा ना कि बहुत सारे मतलब तो रिपीटर्स आएंगे, उसमें से आपको स्टैंड आउट तो करना है, ये तो मैंने अभी मतलब तो कैच किया. मेरा ऐसा ही होता है कि मैं जो स्टोरी बनाता हूँ ना, हाँ वो दैट मच ऑफ द कैपेबल ऑफ नहीं रहती है सर वो. अच्छा कि मतलब हाँ ऐसे कि वो बेसिक सा लगता है सर मुझे. ओके ओके ठीक है हम्म. कोई बात नहीं it happens once you get exposed to ideas na you get an understanding of it it's only in the long run आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ठीक है अगर डेफिनेटली. देखो मेरा असाइनमेंट क्या रहता है ना साइक में जब अभी आ जाते हैं हम लोग देखो इनिशियली 2-3 इमेजेस आप लोगों की 2-3 स्टोरीज रिव्यू हो गई ठीक है अब इसके बाद डेली बेसिस पे मेरा असाइनमेंट होता है ना कि 2 से 3 स्टोरीज आप लोग लिख के मेरे को शेयर करो ठीक है जिसमें से एक आपके मे बी मेजर एरिया से रिलेटेड हो एक कोई इनोवेटिव स्टोरी हो जो कि आपने न्यूज़पेपर से उठाई है या बेटर इंडिया से उठाई है कहीं से भी किसी एक सोर्स से उठाई है ठीक है once you get into that habit ना daily basis पे trust me you'll get used to it not a very big deal ठीक है आज आपको रियलाइजेशन हुआ है कल आपकी स्टोरीज में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा इट्स ओनली अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन ठीक है ओके सर. ओके. थैंक यू. ओके नो वरीज ठीक है चलो ये लास्ट स्टोरी आज के रिव्यू के लिए बिकॉज आई हैव अनदर क्लास टू कंडक्ट ठीक है यस यस. ओके सो कमिंग टू द स्टोरी नाउ ठीक है पिक्चर आई होप एवरीवन इज सीइंग ना रेबा यू देयर अच्छा ठीक है ओके डार्क यार ब्रदर आई फॉरगॉट योर नेम भागीतेश्वर इज इट विघ्नेश्वर सर. हाँ जी विघ्नेश्वर Yes, sir. ओके विघ्नेश्वर ओके विघ्नेश्वर योर यू गाइस आर फ्रेशर्स बोथ ऑफ यू है ना विघ्नेश्वर Yes, एंड sir. रेबा Screen out. ये No, sir, screen out. सेम है ना फ्रेशर टेक्निकली ठीक है सो आई होप सो फार यू गाइस हैव आई मीन यू नो कॉट अप विद द क्लास यू कोई अभी तक डाउट है कुछ एनीथिंग यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड No, sir. क्लैरिटी है अभी तक No. ओके ठीक है see so initially I had this challenge because initially what happened ki repeaters used to get more out of me because they would be able they used to have a proper I mean base ठीक है कि exposure होता था ठीक है initially but later on what I did is fresher freshers के point of view से I added this major area वाला thing and I structured it so that I mean, anyone can take away things from it, right? So, repeater or fresher alike, both of them alike. Okay. So, the only point is that focus on the major areas part, right? So, today we have discussed in the class what all things you might guys might have to do. Tomorrow, 2 to 3 stories I want you guys to pick up, right? Share with me and start working on the major areas. Okay. Chalo, coming back, Sai in summer vacation decided to go on vacation near द सी शोर ओके सी शोर की जगह ना कुछ लिख दे लोकल उसमें स्पेसिफिक लोकेशन ओके. हाँ. फादर टोल्ड his other friends to join him on vacation Sai on the next day planned the whole trip and booked the ticket okay from trivago.com and okay ठीक है this is interesting this is nice to chill out and staying purpose okay he also accompanied with the safety measures things like first aid box also he packed the various games listed in the ठीक है they reached next day and enjoyed with a good evening uh, also with a
कैंप फायर, म्यूजिक। अरे भाई ये कहाँ, ये तो बोटिंग हो रही है यार, इसमें बोटिंग हो रहा है ना। ये सर। ये तो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। इनिशियली यहाँ तक फिर भी ठीक लग रहा था, सी शोर इज ऑल्सो फाइन, व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर बोटिंग, है ना। You could have gone for boating out of one of those activities what they did. Boating करा and it turns out there was a competition ongoing, so they participated as a family. और भी पीछे देख रहे हैं, देखेगा तो बोट्स दिख रही है ना, so there ये might be, सर, ये सर। हाँ, so they might be in a competition or something. ठीक है, they were equipped with life jackets. Simple. बेस थीम सेम रहेगी, बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, माइनर चेंजेस चाहिए इसमें बस। ठीक है, बट इट हैज टू बी लाइक कनेक्टेड विद द स्टोरी। हाँ सर, ये सर, राइट। ठीक है, सर बहुत ज्यादा डेविएट होगी ना। बहुत ज्यादा डिविएट हो गई, आई मीन डिविएट क्या, हाँ, आई ही नहीं वहां पे, आई मीन चली तो थी, आएगी नहीं, राइट राइट, हाँ, यस। सोर्स से चली थी, बट डेस्टिनेशन में पहुंची नहीं गाड़ी। ठीक है, गॉट इट नो सर। वरीज, नो वरीज, हो जाएगा, इट्स ओके। ठीक है, so right guys, so that will be all for today. Tomorrow we'll start off with the review of Athar. ठीक है, थर्ड स्टोरी भी देख लेंगे। ठीक है, and thereafter we'll keep moving in an alphabetical order. ठीक है, so tomorrow we'll start off with Bigneshwar, ओके सर। है ना, बिग्नेश, सॉरी बिग्नेश। यस, थैंक यू ठीक है, ओके। सर। लास्ट में एक बात करी मुझे। हाँ पूछो। हाँ, सर एक्चुअली अभी क्या है, एसएसबी डेट्स है ना मेरी, वो बहुत ज्यादा लेट है। जैसे हमारा तो कॉल पे हुआ था बात, ओके, अगस्त में, ओके। तो अभी क्या है कि ये जो टाइम स्पैन है, ये मतलब ये बहुत है। तो उसमें ऐसे भी नहीं कर सकता ना कि रोज एक मतलब ये 6-7 तो स्टोरी मतलब तो लिखो, क्योंकि तब तक तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। 6-7 नहीं, मतलब छह मुझे, सात नहीं करना, हाँ मैं समझा। और एक जो ये मतलब ये पूछना था मुझे कि आपने जो बोला ना, जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस रहती है, जो हाँ 3 जो एस्पेक्ट दिया आपने, हाँ। एक मेजर एरिया, एक स्ट्रेसफुल एंड एक अनरिलेटेड वाला। तो उसमें जो एक्शंस हमें जो डालने, मतलब एक्सीडेंट की सिचुएशन होगी या फायर फ्लड की होगी, ओके। तो इसमें जो एक्शंस हमें डालने हैं ना, ये हमें ये पहले से ही मतलब तो लिख लेंगे हाँ, कि मोर और लेस अगर पहले से, एक्सीडेंट के आगे, मोर और लेस कुछ चीजें। एक्सीडेंट के आगे तो हमें ये सिचुएशंस मतलब एक्शंस हमें लिखनी है। वो हाँ सिचुएशंस तो वहां पे आ जाएगी हाँ। कि मतलब ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ या सीन हुआ, और एक्शंस हमें मतलब उसको पहले तो हमने मतलब तो हॉस्पिटलाइज किया, फिर तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, मोर ऐसे और वाले लेस में ये वाले सिचुएशन। तो, हाँ ये वाले तो प्री डिसाइडेड होते हैं डेफिनेटली। आपको वहां पे क्या देखना है ना, कॉजेटिव फैक्टर क्या है। जैसे कई बार जैसा आग लगी हुई है ना, तो खिड़की अगर जैसे मतलब एक ट्रिक सिनारियो देते हैं, बिल्डिंग है, आग लगी है और खिड़की टूटी हुई है, खिड़की के सामने कांच गिरा हुआ है नीचे, ठीक है, और उसमें से धुआं निकल रहा है। तो एक बात समझो, कोई बंदा बोलेगा शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ठीक है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि खिड़की के नीचे कांच गिरा हुआ है, यस विघ्नेश, यू हैव टू से समथिंग। नो सर, जस्ट माय। Okay, okay, no worries. So if you can see, there is कांच in front of the window. Obviously it means कि something of explosive nature it went off there, है ना। पहले कांच टूटा, बाहर गिरा, उसके बाद आग बाहर आई है। ठीक है, so if you rush in automatically, he rushed in with a blanket, with a wet blanket over his shoulders to save someone. ठीक है, not advisable. Might be chemicals की वजह से आग लगी है, might be explosion हुआ है कुछ। ठीक है, so point is कि वहां पे आपको ना on the spot देखना पड़ेगा causative factor क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से actions modify होते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से ऑल्दो ये चीजें आप निकाल सकते हैं। वही मैं बोलने वाला था, कल न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेज वगैरह, ठीक है, कहाँ से ये सारी चीजें पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यस सर। ओके, ओके। राइट गाइस, ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो देन।
Have a good one. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Good night. Thank you so much, sir. Good night. Good night. Thank you.